Whatever function an aspirant is compelled by his destiny to fulfill in his present life, the results of past actions and reactions, he must try to accomplish it to the best of his ability and sincerity without getting attached to it or emotionally involved in it or devoured with the concern for its success or failure. However, if it be his fate that all the perfection he so painfully struggled to achieve throughout his existence should one day suddenly crumble and come to nothing, then ever bringing disaster in its trail, yet is the in the very midst of this situation, no matter how hopeless it may seem, he must, in the depths of himself, somehow learn to be quiet and unruffled as possible. He should strive to find in himself the courage and fortitude not to let this situation submerge him to the point of interfering with the spiritual work and his other duties and obligations in life. इस बुक में ये चैप्टर है मिस्टीरियस रोल ऑफ सफरिंग के ऊपर कि हम सभी की लाइफ में सफरिंग आती है, हम सफ़र करते हैं. तो इसमें ये लिखा है कि हमको जो है अपना बैलेंस नहीं खोना चाहिए. फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि हमें अपने कर्मा को लेके लिखा है कि हमको अपने हम जो भी कर्म करते हैं हमें अटैच नहीं होना है, इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना है. डिटैच होके हमें कोई भी काम करना है, अपना कोई भी कर्म डिटैच होके करना है. और कर्म फल का के ऊपर फोकस नहीं करना है, जैसे कि गीता में भी लिखा हुआ है. और इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि कैसी भी सिचुएशन हो लेकिन आपको अपना बैलेंस जो है बनाए रखना है. कितनी भी मुश्किल सिचुएशन आए लेकिन अपने मन को आपको शांत रखना है. कोशिश करनी है कि अपने आप को अंदर से आप शांत रखें अपने मन को, कि वो सिचुएशन आपके ऊपर हावी ना होने पाए. When for some unknown reasons a person is tragically struck by life, to all appearances there is nothing he can do to avoid his fate, then abandoning himself to the hands of divine providence can become the most precious lesson he can learn at this stage of his spiritual work. A lesson may not have otherwise been possible. Everything that happens to a human being has its deeper significance and can be transformed into an opportunity to further his spiritual advancement. तो जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, कोई भी मुश्किल आई है, कोई भी टफ सिचुएशन आई है, तो वो आपके लिए एक लेसन है, ताकि आपकी जो सोल है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके. जो भी लेसन है आपको उसमें सिचुएशन में से देखना है, सीखना है और मूव ऑन करना है. For most people, suffering is perhaps the only means that can make them yearn to seek a way out of the inner slavery to their ordinary selves and eventually find the road to their emancipation. When a seeker is sufficiently prepared by the past experiences to face tribulation and has the force and wisdom not to let himself succumb to a state of morbid despair or auto-destructive passivity, then this suffering can be consciously and constructively transformed into an instrument to accelerate his spiritual
evolution in making him look into the depths of himself, where he will, in time, discover his ultimate and true citadel. In this stage, in this refuge, only will he find peace from the painful blows of outer life. सो ये पैराग्राफ ये कह रहा है कि मोस्टली लोगों की लाइफ में सफरिंग आती है, कोई दुख गहरा दुख आता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है, मुश्किल आती है, तभी वो जो है भगवान की तरफ मुड़ते हैं। तभी वो भगवान की तरफ जब हमारी लाइफ में कोई दुख आता है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, तभी हम जो है भगवान की तरफ भगवान को याद करते हैं या हम भगवान की तरफ मुड़ते हैं। Generally, the human being is born in suffering and dies in suffering. By its very nature, the earthly existence cannot be anything else but suffering. The human being will suffer in one way or other all the time, either for common transitory things or to reach a higher goal. Life is always full of unexpected surprises, problems, changes endlessly, creating pleasant conditions at a certain times and pleasant ones at the other times. As long as a person is not centered where he ought to be in himself, he will keep blindly favoring ones and resisting others, or by so doing he will only increase his suffering, making it even harder for him to get free from it. All through his existence he will continue to be helplessly tossed about by the tumultuous waves of life, until in the end he becomes so too dazed to face that mighty and awesome moment that awaits all human beings when their hour comes to abandon their physical frame. At that critical instant he will find himself tragically unprepared and will be inexorably taken by surprise. जनरली जो है एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ सफरिंग ही है। हम इस पृथ्वी पे अर्थ पे हम जन्म लेते हैं और हमारी सफरिंग शुरू हो जाती है। ये जो हमारी लाइफ है ये अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं, चेंजेस हैं और मतलब फुल ऑफ अनएक्सपेक्टेशन है, सफरिंग है। जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान सिर्फ सफ़र ही करता रहता है किसी न किसी रूप में। जब तक वो खुद के अंदर अपनी जो उसका ट्रू सेल्फ है उसमें सेंटर नहीं रहता, जब तक वो बाहर की तरफ जो है भागता है, बाहर की दुनिया की तरफ भागता है, तब तक वो सफ़र करता रहता है। Life with all its imperfections is in these very imperfections extraordinarily perfect, for without these strife, pains, uncertainties that go with worldly existence, human beings would not think of looking for a means to free themselves from its merciless tentacles to arrive. As at the discovery of the divine that they carry in them, they would altogether vegetate, finally falling into an eternal and hopeless sleep. The way of yoga is like a deep river, difficult to cross. On its far shore lies liberation, unsurpassable beauty and felicity. Those few who have succeeded in reaching its existence spiritual delights, a state of vast peace and bliss of those magnitude it is impossible for the ordinary person to conceive.
His ignorance, the latter, is also in a certain way content with his condition, with all the various transient pleasures and the pains that go with them, which life offers them. तो इस पैराग्राफ में कहा गया है योगा जो है वो एक डीप रिवर की तरफ है. योगा जिसको एक रिवर की तरह है और जिसको पार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके पार जो है लिबरेशन है, ट्रू लिबरेशन है, ट्रू ब्यूटी है, फेलिसिटी है, ब्लिस है, हैप्पीनेस है. और जो लोग जो है इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो जो इस ब्लिस को, इस पीस को महसूस कर चुके हैं वो बहुत ही कम लोग हैं, क्योंकि एक नॉर्मल ऑर्डिनरी इंसान के लिए ये बहुत मुश्किल है. क्योंकि जो इंसान है वो अपने एक तरीके से अपनी सफरिंग से ही, या जो टेम्परेरी प्लेजर्स हैं, टेम्परेरी हैप्पीनेस है, या टेम्परेरी सफरिंग है, पेन है, वो उसी में फंसा रहता है, वो उसी में अपनी संतुष्टि ढूंढता है. बट फॉर द एस्पिरेंट who is suspected to the existence of sublime universe across the other bank of this turbulent river and is attempting to swim to it, the difficulties he encounters, the suffering he endures cannot be measured and understood except by those who are themselves placed in the same situation. For he is now beset with endless risk of drowning in its raging waters, of continually losing his way, or of being destroyed by mysterious forces that inhabit it. At such moments it will seem to him that whole universe is rising against him. Even his own family, who may not understand his plight, will add to his hardships by becoming an additional hindrance in his not realizing what is at stake for him. Having had glimpses of the wondrous mystical world that is ever calling him from yonder shore, and having at times, by divine grace, already received from some encouraging spiritual sweetness, he can rest no more and not be satisfied with anything less until he arrives at the end of his dramatic journey and attains the sublime. तो जिसने एक्सपीरियंस कर लिया है कुछ हद तक इस स्पिरिचुअल ब्लिस को या स्पिरिचुअल हैप्पीनेस को, सिर्फ वही जानता है कि उसने क्या एक्सपीरियंस किया. और जो जिसने एक्सपीरियंस कर लिया है उसके रास्ते में बहुत जो है ऑब्स्टेकल्स आते हैं. कई बार उनकी अपनी फैमिली जो है नहीं समझ पाती है कि वो जो इंसान इस रास्ते पे जा रहा है या जिसकी जर्नी है, उसकी खुद की फैमिली भी उसको नहीं समझ पाती है, और एक तरीके से ये उसके लिए बहुत बड़ा एक रुकावट होती है, ऑब्स्टेकल होता है. लेकिन जिसको ये एक्सपीरियंस हो गया है, जिसने ये देख लिया है कि जो डिवाइन ब्लिस है या डिवाइन हैप्पीनेस है, पीस है, जो